Bismillahirrahmanirrahim. I have started recording. Kindly confirm that slides are visible and my voice is clear. Yes, sir. Okay, Yes, today we are going to cover lecture number 10, and that is in continuation of the topic that we are covering, and that is about the interest. In last lecture, we have seen that how we can calculate the effective annual interest rate. We have solved an example and see that why effective annual interest rate is more than the nominal interest rate if the compounding is more than once in a year. Now we have the formula to calculate the effective annual interest rate. For this, we will see different problems and see the effect of compounding. Now, effective annual interest rate, as an example, if 12% annual rate compounded monthly, we will pick this statement. In this statement, 12% is the nominal interest rate, that is 12% is the nominal interest rate. Compounded monthly means compounded monthly tells us that number of compounding periods in an year are 12. So, M is equals to 12. The effective interest rate per month is 1%, and we would like to be able to convert this to effective annual interest rate. For converting into effective annual interest rate, we have this formula. I is equals to 1 plus R over M raised to power M minus 1. This is the formula to calculate effective annual interest rate. Instead of solving a problem like we have done in last lecture and then seeing its effect and calculating the effective annual interest rate, from this formula we can directly calculate the effective annual interest rate. The effective annual interest rate I for a nominal interest rate R compounded M times per year is 1 plus R over M raised to power M minus 1. So you need to know that what is R and what is M. R is nominal interest rate as it is shown, and compounded M times per year. So we need to know the compounding frequency, that is M. Now we will solve monthly compounding example. Here in the given data, R is 9% per year compounded monthly. So this is the nominal interest rate, 9% per year compounded monthly means M is equals to 12. So the effective monthly rate is I is equals to R over M. Formula that we have applied here is I is equals to R over M. R is 0.09 divided by 12. That is 0.0075 or 0.75% per month is the effective monthly rate. Effective annual interest rate, that is 1 plus R over M raised to power M minus 1. As it is already calculated R over M, so the effective annual interest rate is 9.38% per year. 9.38% per year, that is effective annual interest rate. So in this way we can calculate the effective annual interest rate. Again, if we have given the nominal interest rate followed by compounding frequency, we can calculate the effective interest rate per period and effective annual interest rate. Now moving towards the next example. Before that, there is some further detail that R is 9% is nominal rate, effect compounded monthly means M is equals to 12. Effective monthly rate is 0.75%, effective annual interest rate is 9.38% per year. Now you can see that here each time the interest in each period is 0.75%.
Why then the overall effect is more? We have seen in the last example that because in each period then the principal amount on which the interest rate is applied is being increased. That's why at the end of the year the interest which actually is being applied is 9.38%. That is the effective annual interest rate. Now here we have the quarterly compounding example. Now you are required to solve this and tell me the answer. The same formulas that we have applied for the monthly example are required to be applied for this quarterly compounding example. Here R is 9% per year compounded quarterly. You need to know that what should be the value of M. Only you need to change the value of M. The remaining data is same. You can calculate and share your answer. I am waiting for your response. Yes, sir. You need to calculate effective quarterly rate and effective annual interest rate. Effective quarterly rate and effective annual interest rate. Effective quarterly rate and effective annual interest rate. Okay, tell me what should be the value of M. Like in the monthly example, M was 12. Here it is compounded quarterly. So M should be equal to
जी, किसी को भी नहीं पता कि m की वैल्यू क्या होगी? फोर सर। Yes, it is 4. Now, how you can calculate the effective quarterly rate? I is equals to R over M. Now, if you know R, that is 0.09 divided by 4. So, it will be the effective quarterly rate, and then we can calculate effective effective annual interest rate. So, there are 4 quarters in a year. After 3 months there will be a quarter, so there are 4 quarters in a year. Effective quarterly rate is 0.0225 or 2.25% per quarter. That is the effective quarterly rate, and from this we can calculate the effective annual interest rate, that is 9.30% per year is the effective annual interest rate. This is the formula 1 plus R over M. R over M is already calculated. R over M. 1 plus R over M raised to power M. M is 4 minus 1. That gives us the effective annual interest rate when the compounding frequency is quarterly. Now this is one more example, weekly compounding example. You are required to calculate effective weekly rate and effective annual interest rate. Effective weekly rate and effective annual interest rate. What is value of m in this example? m क्या होगा? m की वैल्यू क्या होगी? होगी सर। ओके, तो इफेक्टिव वीकली रेट क्या होगा देन? कैलकुलेट करें और बताएं ज़रा। इफेक्टिव वीकली रेट और इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। वन 1.73%।
Okay. And what is effective annual interest rate? Effective annual interest rate if the compounding frequency is weekly. अच्छा, कोई फॉर्मूला आप बताएंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यस सर। जी बताएं। सर 4.86 आती है। Effective annual interest rate is 9.40% per year. देखें हमने 1 प्लस आर ओवर एम यहाँ पे यूज़ किया है। आर ओवर एम इज इक्वल टू 0.00173। 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर एम माइनस 1। तो आपका आंसर आना चाहिए 0.0940 और 9.40% पर ईयर। इसको काइंडली अपनी कैलकुलेशन चेक कर लें। Now we will see the comparison and conclude. The effective annual interest rate is always greater than the nominal interest rate. You are earning interest on your interest, or if you have taken loan, then you are paying interest on interest. The difference is greater when more frequent compounding. अगर कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है मीन्स कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि इफ़ कंपाउंडेड क्वार्टरली 9.30% पर ईयर इज़ द रिजल्ट. If compounded monthly, then 9.38% per year, and if compounded weekly, then 9.40% per year. These are the effective annual interest rate. So from here we can conclude that if the compounding frequency is more, then we are having the larger value of effective annual interest rate. सर ये कैसे कंक्लूड किए सर? ये हमने इससे कंक्लूड किया है कि देखें अगर क्वार्टरली हम कंपाउंड कर रहे हैं तो हमारे पास 9.30% है. क्वार्टर मीन्स 4 टाइम्स इन एन ईयर. ठीक है. अगर कंपाउंडेड मंथली है तो 12 टाइम्स इन एन ईयर होगा. जो कंपाउंडिंग है
वो हमारी इंक्रीज हो रही है, जो पीरियड है वो हमारा कम हो रहा है, ठीक है। जो नंबर है बेसिकली वो इंक्रीज हो रहा है। एम की वैल्यू जैसे ही हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं, ठीक है। अगर Yes, sir. m हमारे पास 4 है तो 9.30 है, m हमारे पास 12 है तो 9.38 है, m इज इक्वल टू वीकली के लिए 52 है तो 9.40 है। m की वैल्यू के ग्रेटर होने से हमारी जो है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट वो बढ़ता जाएगा। मींस कि हम मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कि पहले केस में हम आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कंपाउंडिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे वीकली बेसिस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं। यू कैन इवन कैलकुलेट फॉर डेली, डेली के लिए m विल बी इक्वल्स टू 365, तो आप Yes, उसके sir. रिजल्ट्स भी यहाँ समझ पे आ ऐड रही है कर सर. सकते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. in this way we can conclude that the difference is greater when more frequent compounding. Now effective interest rate per payment period, this is again हम इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कर रहे थे जिसमें हम ईयरली बेसिस पे देख रहे थे, बट अगर हमारी पेमेंट्स ईयरली के अलावा हो, पेमेंट पीरियड डिफरेंट हो, तो देन we use this formula, and this formula is I is equals to 1 plus R over C K raised to power C minus 1. Here you need to know that what is C and what is K. इसको काइंडली अच्छे तरीके से समझ लें कि C क्या है और K क्या है, बल्कि इसको नोट कर लें। यू कैन नोट, आप अपने वर्ड्स में इसको नोट कर लें, व्हाट इज C एंड व्हाट इज K, because the entire solution depend upon the understanding of C and K. C is number of interest periods per payment period, number of interest period per payment period. सर ये दोनों सी सेम है सर, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. देखें वहाँ पे हम इफेक्टिव एनुअल देख रहे थे, यानी एनुअल बेसिस पे उसका इफेक्ट देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम पेमेंट पीरियड की बेसिस पे उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि जो हमारी पेमेंट है वो ईयर के दरमियान में किसी वक्त अगर हो जाता है तो फिर हम उसका इफेक्ट देखेंगे कि हमारी जो है वो पेमेंट पीरियड भी ईयर से डिफरेंट है, लेकिन उस पेमेंट पीरियड के अंदर हमारी फर्दर हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पेमेंट पीरियड के अंदर फर्दर हमारी कंपाउंडिंग हो रही है, तो उस इफेक्ट, उसका इफेक्ट कैसे विजिबल होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें C जो है नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड पर पेमेंट पीरियड है और K नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स पर ईयर। कि हमारे एक साथ सर एक जी क्वेश्चन पूछना था सर. हमारा सर कितना कोर्स रह गया है? हमारा कोर्स हम अराउंड 2/3 हम कर चुके हैं। ये हमारा इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है, इसके यस बाद सर. हमारे टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, यस सर. ठीक है। यस सर. आई नो कि ये क्योंकि हमारे एज जो हमारा अप्रूव्ड करिकुलम है उसमें हमारे दिस मच कोर्स इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग 3-4 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। ओके सर. दिस इज द लास्ट वन। K इज नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स पर ईयर। आगे हम एग्जांपल करते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। C नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स पर पेमेंट पीरियड एंड नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पर ईयर। Here, first see the 8% compounded monthly, and payment period is quarter, interest period is monthly. ये आपके डाटे का पार्ट है, ये जो गिवन है that is information will be with you in this type of problems. 8% compounded monthly, payment period is quarter, interest period is monthly. कि हमारे जो इंटरेस्ट पीरियड है वो मंथली है लेकिन पेमेंट पीरियड क्वार्टर है। इसका क्या मतलब है कि एक क्वार्टर के अंदर हमारा जो है वो मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। सो देयर आर 3 इंटरेस्ट पीरियड्स, क्योंकि मंथली बेसिस पे अगर इंटरेस्ट पीरियड है, देयर आर 3 मंथ्स इन अ क्वार्टर, सो वी नीड टू सी दैट व्हाट इज K एंड व्हाट इज C.
K is 4 payments per year. Why payment period is quarter? There are K हमने क्या कहा था? Number of payment periods per year. K किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Number of payment periods per year. So there are 4 payments per year. K की वैल्यू 4 कैसे आई? बिकॉज नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पर ईयर जो है क्वार्टरली के केस में 4 होंगे, बट C is equals to 3. Why? Because there are 3 interest period in a quarter. C is equals to 3 interest periods per quarter. We need to apply this formula 1 plus R over Ck raised to power C minus 1. So the result is 2.013% per quarter. This is the compounded monthly, where the interest period is monthly. You can calculate the value of I by changing the interest period from monthly to weekly. बाकी डाटा सेम रहे और इंटरेस्ट पीरियड अगर हम मंथली से वीकली कर दें तो काइंडली इसको कैलकुलेट करें कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे. Only you need to change the interest period from monthly to weekly. यहाँ पे इंटरेस्ट पीरियड मंथली से वीकली में शिफ्ट कर दें और फिर देखें कि उसकी इफ़ेक्ट क्या होता है, आई की क्या वैल्यू आती है, क्या कैलकुलेशन होती है. So if the payment period is quarter and interest period is weekly, what will be the values of K and C respectively? K की वैल्यू क्या होगी और C की क्या होगी अगर पेमेंट पीरियड क्वार्टर रहे और इंटरेस्ट पीरियड मंथली की बजाय वीकली हो जाए.
ओके, ब्रेक कर लें। ब्रेक में इसको भी सोच लें कि क्या के और सी की क्या वैल्यूज़ होंगी। आफ्टर ब्रेक हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।